हेलो गाइस, क्या हाल? हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ब्रो। गुड इवनिंग सर। राम राम। राम राम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मन नहीं था मेरा, मैं तो सो रहा था। इन लोगों ने कहा कि इंटरव्यू प्रेप सेशन ले लो। देखो, नो बिग डील। ये जो डीपी है, क्या वर्क हार्ड क्या लिखा है? I mean, सर गलत उसमें आ नाम गया क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं, भाभा शुभांकर। ओके। हाय सर। नहीं, टाटा एंड भाभा बैच का मर चल रहा है। हाँ। आज। अरे आदिल, आदिल भी यहाँ पे। नाइस। हाँ सर, वही तो पूछ रहा हूँ, गलत उसमें तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट एक्चुअली टीचिंग एनी मोर। मेरा वो हो गया था, क्या कहते हैं, इन लोग को शायद लीव लिया है इंस्ट्रक्टर ने आज, एंड आई वाज स्लीपिंग, सो दीस गाइस सेड चलो टेक इंटरव्यू प्रेप सेशन। आई वाज लाइक ओके। मजे की बात यह है कि शुभांकर ने अभी रीनेम किया अपना नाम। वी वांट गोपी सर। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। आई एम नॉट वेरी स्मार्ट बिकॉज आई हैव द कंट्रोल। आई कैन चेंज योर नेम व्हेनेवर आई वांट। ओके, दैट सर वाज अभी नॉट अ जो वेरी टेस्ट स्मार्ट थिंग होने टू वाला डू। है उसमें क्या पूछने वाले हैं? आपके पास आएगा ना पेपर? वैसे मैं मना कर चुका, मेरे पास पेपर आए ना, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माय स्टडीज नाउ। बट कब है वैसे हाँ, टेस्ट? 26 को। डीएसए और कोर 6। सीएससी का 26 को। डीएसए एंड कोर सीएससी। और 27 को फ्रंट एंड है फिर। ओ। तो वही डीएसए और कोर सीएससी में क्या पूछेंगे सर, ऐसा सोच के समझ नहीं आ रहा। थियोरेटिकल रहेगा क्या? नहीं, थ्योरेटिकल तो नहीं होता है, बट फॉरगॉट दैट गाइस नेम जो मेरे को पेपर भेजता था। अह, राहुल नाम था कि क्या था? लेट मी आस्क हिम। ओके, माय वॉइस इज क्लियर ना? क्या सर, क्लियर? ओके, लेट मी चेंज हिज नेम। शुभंकर का नाम। कूल। यार कितना अच्छा होता अगर आज छुट्टी हो जाती ना। आई वुड हैव स्लेप्ट। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आप आ गए। बहुत दिन से इंग्लिश इंग्लिश चल रहा था, आज हिंदी हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आई विल टॉक इन इंग्लिश ओनली। नहीं, सारे बच्चों को मतलब नहीं समझ में आता है। सर, हमारा न्यू इंस्ट्रक्टर का कोई अपडेट है क्या सर? कौन सा? न्यू इंस्ट्रक्टर असाइन होने वाले हैं ना माइक्रोसॉफ्ट से, आई गेस, हमारे आई बैच हैवंट हर्ड, बट मैंने नहीं सुना अभी तक। के। कौन सा बैच है, टाटा? नहीं नहीं सर, अंबेडकर। अंबेडकर बैच? आई एम सॉरी नॉट सॉरी, श्योर। भाभा 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 भाभा। भाभा बैच? ना ब्रो, मेरे को ये सब आइडिया नहीं अभी। एक्चुअली शुभम जोशी एंड आई आर फोकसिंग ऑन द न्यू बैच जो 28 फेब से स्टार्ट होगा, जिसमें आईएसएम मॉडल वगैरह नहीं है। सो वी आर मोर फोकस्ड ओवर देयर। करिकुलम ही चेंज कर दिया सर पूरा। हाँ, यस यस, 5 मंथ्स का करिकुलम कर दिया है, एंड दे हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड आई थिंक इट्स गुड। उसमें होमवर्क को कंपलसरी कर दिया। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। फुल टू डे आवर दिया टू होमवर्क। आवर्स पर डे है और full- 2 hours ही है, नॉर्मल 2 hours है, बट नंबर ऑफ क्लासेस आर लेसर इन अ वीक। ओके। असाइनमेंट पे ज्यादा फोकस है ना सर उसमें। ओके, सो hmm, hmm, hmm. I just received a call that I should open my camera, but I don't want to.
What should I do? हाँ सर, हमारे भी इंस्ट्रक्टर अब कैमरा चालू रख के चलता है। ऐसा क्यों? अब मैं तुम लोग के लिए मैं जाऊं अपना फेस वॉश करके आऊं? यही बाकी रह गया। क्या फिल्टर यार। सर, फिल्टर। ये पता है जूम में जो बैकग्राउंड चेंजिंग फिल्टर होता है, इस तरह की चीजें हम लोग बनाते हैं, मतलब जो कंप्यूटर विजन रिसर्च करते हैं। वो जो ग्रीन ग्रीन, हाँ वो क्या बोलते हैं, कर्टन वाला। हाँ, बैकग्राउंड सॉलिड हो तब उसका रिप्लेस कर देता है बैकग्राउंड। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल अरेंज माय रूम थोड़ा सा। ओके, अब कैमरा ऑन करना है तो माय रूम इज नॉट दैट प्रिटी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? You guys talk among yourself. I'll be back in a second. I'm back. I'll just shift my table a little bit. Just give me a second. I'm back. I don't know how do I look. Let me open my camera. Ew, ew, क्या है ये? What is this face? क्या कर सकते हैं? Okay. Let me rearrange my pen stand. They just told me to switch the camera on, no? So I had no idea कि I don't know. एक second. चलो ठीक है. I just shifted my table because अब बैकग्राउंड तो I can't change now. Okay? Because बैकग्राउंड में मेरे कपड़े टंगे हुए हैं. वैसे मैं ऑडिबल? या सर। सही है ना? रिस्पॉन्ड कर दिया करो, डर लगता है बीच में. Where should I keep my camera? Where should I keep my camera? Okay, okay. I'll actually switch my camera off because it's taking a lot of time. Okay. Hello guys. So ठीक है. Enough is enough. 9:10 हो गया. Okay. Let's start our stuff. So, what do you guys actually want to see? I was thinking, let's start a little mathematical uh, question that I just saw. Okay. I am like, look, I was going through some interview preparation questions for Google. So let's see if you guys can understand this. Okay. So there are two questions that I was seeing. One is this one. Arey Kanu, you are also there. Good evening. Kya haal? Okay. So
if given 3 characters, take A, B, and C, and there is some restriction that we can have at most 1 B or 2 Cs. Okay. So I want to generate all the possible set of strings. So what does this mean? Let's take this example. Okay. We have 3 characters A, B, and C, and at most, what should be the string length of the string? N. So how many strings can we make unique? Okay, with these characters, with the restriction that B's can be at most 1 and C's can be 2. Okay. Any approach? Any idea, guys? I'll give an example first. Let's say n is equal to 1 is pretty easy. So 3 characters we have: A, B, and C. Okay. And the length allowed is, let's say, n is 2. Okay. And B's can be at most 1 and C's can be at most 2. So at most means B's can be 0 also, C's can be 0 also. So if only A is allowed, then how many strings can we make of length 2? Any idea? Tell me, people. Only character allowed is A. And I'm allowed to like repeat A's also. I can put one A over here, another over here. Okay. So, and if I change characters now, if I send this A over there and this one A over here, will it change the string? No. No. So with AA, I can have just one string. Okay. So let's say, now let's try to, I cannot do anything with only A's now. There is only one string that will have all the A's. Now let's say I want to incorporate B's also. Okay. Not C, only A and B. Then how many strings can we have of length 2 with A and B? Which ones? A, B, A. And it's enough, I think. 4. No, no. 4 guess? 2. 2 only, no? Because I 4. want to incorporate A. That's like compulsory. Okay. A, B. You have Ah. BA. Okay, cool. So just let me see how I can keep my camera anywhere right now. So I can have a A and I can have a B. Okay. And with A and B, how many things can we make? A, B, and BA. Just 2. Okay, I can make AB and BA. So there are 2 strings. Now, with A, let's say I am not taking now B. I'm taking only A and C. Then how many strings can I make? Same. Okay, A, C, and C. 2. Now what can I do? Let's say there are no A's. Only BC is allowed. Then BC. guys, somebody's like background message or disturbance are so mute kar lena. So BC and CB. There are 2 strings like this. Length 2, length 2, length 2, everywhere length is 2. And now we have only C's. Then I can have one more string with only C's. Okay. Can I make any other combination, any other than this? With ABC, length is equal to 2. And these 2 restrictions should be followed. I cannot have 2 B's. That is not allowed now. B can be at most 1. So this is not allowed. So this question boils down to principle of counting question. Okay, we are just supposed to count. This is more of a, what do you call it? Permutation and combination type of question. Okay, this is more mathematics centric. Okay. So how many strings are there in total? 1 plus 1, 2 plus 6, 8. Okay, now we are supposed to write a code. If n is given as input in this code, if n is provided 2, my code should give 8. Okay.
Just for an easier example, if n was 1, then how many strings can I make? 3. Only Yeah. only 2. Okay. First of all, somebody is saying 3. So why 3? A, B, and C. Okay. And somebody said only 2. Why 2? Sir, sorry, only one hoga. नहीं नहीं मतलब the length is allowed is 1 and I have 3 characters, so I can either have A or I can have B or I can C. C. Okay. ठीक है? दो So 3 there are होगा. total 3 strings. Now if I see the example, if n is 1, the output should be 3. Cool. Now is the Okay. question clear? Tell me people. Now is the question and the example clear? Yes, sir. Yes, Now we sir. can talk. Clear. We can talk about the algorithm now. Like few people are saying yes, but still I want to know, like, is anybody else in the lecture who didn't understand what happened over here right now? Let me see the chat window. Okay. Good evening. Good evening. Vlog banao. Nahi, nahi. Okay. Cool. Anybody has an issue? Raise your hand or just write in the chat. I'll just count to 10 in my head. Okay. Cool. Nobody's there. Explain one more time. Cool. Okay. There is one more person. See, there is right now what we are doing. Like whenever you have any algorithm, any question, okay, the most important thing, like I've already taught in DSA, we should first try for brute force approach. Okay, so right now I'm trying a brute force approach. So where is this cursor? So what was a brute force approach? The question is straightforward. Okay, it's a easy question, but thoda sa you need to understand which character you are going to choose, which you are going to reject. Okay. So number of strings, count number of strings. Yeah, spelling mistake. Okay, there should be number. So count number of strings that can be formed using A, B, and C under given constraint. What is the given constraint? At most 1 B and 2 C. That means at most 1 B and at most 2 C's are allowed, and only A, B, C 3 characters. Okay. Now if I start from the easier part, if n is 1, what is n? N is the allowed length of the string. Okay. Okay, give me a second. Cursor is freezing a little. Okay, just give me a second. So if n is 1, that means the length of the string allowed is 1. In my allowed characters, I have 3 characters. So either I can put an A over here. Okay. This is one string. Or in that place, I can put B. Or in that place, I can put C. So if n is 1, these are the only 3 strings which are possible. A little more complicated. If n is equal to 2, then what should we do? So if n is 2, then that means that allowed length is 2. Okay. In our string, the allowed length is 2. So in these 2 blanks, okay, this is my string. I can choose characters from A, B, and C, and the rules are at most 1B, at most 2C. So first, let's not take any B and C, okay, because at most 1B and at most 2C means we can choose no B's and no C. So if only A's are there, this is like, it doesn't matter if I shuffle this A over here and this over there, there will be only one string of length 2. Okay, that's pretty clear enough. But if I try to incorporate B now, if A is there and B is here, this is one string of length 2. And if I shuffle the characters, the only other string that I can generate is BA. Hai na? Is this clear, Rajneesh? The length of the string allowed is 2, and the characters from ABC, AB and BA. So I can have 2 strings which have A and B. Rajneesh, you asked for explanation. No? Can you just tell me? Clear now? So this was for the case of A and B. Similarly, if I don't take B, if I only take C, then I can have, first of all, I can put 1A for the first character. The second can be C. And if I shuffle characters in this string, I can generate a CA also. There will be 2 strings like this. Okay.
And with C, I can do one more thing, because C can be at most 2 and 2 positions are empty. So I can put 2 C's also over here. Okay. There is one string of this type. Cool. Now just tell me, Rajneesh, are these 2 strings also clear? With A and C, I'm not taking B right now. Okay. This one for AA, this one was for A and B, what I can do with. And if I take A and C, but not B. Over here, A and B, but not C. Okay. Now, I cannot take A, B, and C, all 3 together. That I cannot take. Okay. Because the smallest string will be of length 3. And that is not allowed over here. Hai na? So what I'll do? Now, the only option left is B and C. With B and C, what I can do? I can make it C and B. Hai na? Now, these are the only possible set of strings that can be generated with this rule followed, this rule followed, this rule followed, and number of characters are A, B, and C. So in total, how many strings are there? 2 plus 2, 4, plus 1, 5, plus 1, 6, plus 2, 8. Now is the question clear? Batao, Rajneesh. Chalo, बढ़िया. Cool. So should I start straight away explaining? Anybody has any ideas how can we solve this? Anybody has any idea? We are going step by step. Okay, take it. The algorithm that my brain suggested, the brute force algorithm. First was take only A's. Okay. Only A's. N can be 1, 2, 3, 100. It doesn't matter. I only want only A's. Second, A and B. What I can do with A and B. Okay. Then I went for A and C. Okay. Then I went with B and C. Cool. These are the 4 steps that I used. If possible, after only A's, I can also see only B's and only C's also. Cool. So if n is 2, if length of the string is 2, then B's I cannot put, 2 B's I can't put, okay, because the rule was at most 1. But if the length is 2, I can put 2 C's. So is this approach clear, guys? Batao. Hello, Adil, can you hear me? Yes, sir. Like, समझ में आया क्या कर रहे हैं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझा है. अरे बहुत पूरा थोड़ी. समझो ना. कौन से पॉइंट पे लग रहा है कि मतलब at what point do you think कि like नहीं सर, things are कोड good? सोचने में ऐसे लॉजिक समझ में आ रहा है, कोड सोचने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. कोड तो हो जाएगा. That is not a big deal. ठीक है. C लॉजिक समझ मतलब में आया कि पहले ओनली बी हो, फिर कंडीशंस लगा देंगे कि बी को अगर 2 है तो नहीं लेना है. हाँ, because we have 3 sets of characters. So I'm choosing first of all A and B. ठीक है. Then I'm choosing A and C. Okay. Then I'm choosing B and C. ठीक है. And if possible, I can choose A, B, C also. If the length is more than 2, then only I can go for this thing. Okay. So should I take the another example also? N is equal to 3 wala. You want to see this, guys? बताओ. बहुत लंबा हो जाएगा. कोड ऐसे लिखना ना ताकि समझ में आ जाए 100%. लंबा तो हो ही जाएगा, but still I won't write all the examples because the explanation is given over here. Okay. Because n is equal to 3 में you will get a ABC. Okay, that is allowed. So just tell me one thing, guys. Do you understand this thing? If I have a string, okay, listen to me clearly. Forget the question right now. Forget everything. If I have a string that is
A, B, C. This is a word. Okay, this is a string. By changing the order of the letters, how many strings can I generate? I can give you one example. I can shift one B over here and A on the right. Okay, this I can do. So how many other strings I can generate from ABC? Think. CBA. Cool. So CBA means you just reversed everything. Okay, CBA means you interchanged A and C. C, B, and A. And I can give you a better approach, but still, let's see brute force kya keh raha hai. What is your head saying? I can interchange B, C also. Let's say A is over here. I can change B and C. Okay, these are three. And this one is the fourth one. I can actually have two more. Can anybody tell me two other strings? Then I'll tell you how this thing comes. It is just a simple question of permutation. CA. Give me a second. Let me just reload this. What did it say? CA. Yep. B, C, and A. There's one string remaining. CBA. CBA हो गया. Okay. CBA हो गया. Very close to that one only. Very close to that one. BSc हो गया sir. BSc हो गया. BSA is on the top. Very close to this ये one. हो गया है. BCA हो गया है. CAB. ABC. CAB. CAB. Okay. That. Okay. Now let's think for a second. See, this question is actually more about understanding this permutation. Okay. So I'm trying to teach you. Basically, this lecture will be a little bit on permutation. What is permutation? The English word permutation means to just shuffle stuff. Okay. So we're talking about shuffling right now. Forget the question for a second. Okay. There are three characters in a string. At the first place, how many choices do I have? I have three characters, ABC. Yeah, three Okay. choices. I can either put a A over here, or I can put a B over here, or I can put a C over here. Okay. I have three choices for the first character. For the second character, what will be the choices? How many choices are here for the second character? If I choose the first character to be A, second can be, somebody said the correct answer. Three. B and C. B and C, two options. Okay, I can go two ways. Either first is decided is okay. हाँ, first is decided. अगर हम लोग को रिपीटिंग कैरेक्टर यूज करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा. हाँ, but अभी right now नहीं, ठीक है? Because I already have the string that I'm shuffling. Are there any repeated characters? No. नहीं ना? So the first character is A. The second one can be either B or it can be C. ठीक है? Is this clear? Everybody in the lecture, Deepak and Rajneesh, everybody. If I'm fixing, first character I'm fixing is A. The second can be either B or it can be either C. Okay. In this string, how many choices do I have for the last character? One. There is only one Only choice. one. Okay. A and B I have already put over there. So kya bacha? C. There is no choice. There is only one choice. Okay. Similarly, for this string, A and C I have already put. So what will come over here? B. B. Okay. So for second character, over here I had either B or C. So two choices were there. Okay. Similarly, for this one, I can have two choices again. If I'm fixing the first character as B. Okay. The second character can be what? A or C.
either A or C. So I have two choices here also. Similarly, here also I'll have two choices, but we'll talk about it after B. Okay. If I fix C over here, for the next character, I'll have two choices here, A or B. Okay. Here, A and C. Either I can put an A over here, or I can put C over here. है ना? Yes, sir. Okay. So, what is the choice for the last character in this string? What will be the last character? If I fix B and A, then what should be the last character? C. C. There is only one choice. Here also, only one A. choice. A. Okay. Here I fixed C. So here either I can put A or I can put B. Okay. And if I have chosen the first two characters now, there is no choice that I have. Only one option is available, that if C is here, A is here, then I can put B. B. If C is here, B is here, I can only put A. A. Are these number of strings same as these number of strings? Yes. Yes, sir. Okay. 6, 6. So ABC is here, BAC is here, CBA is here, ACB is here, BCA is here, CAB is here. Okay, all of it is covered. So for the first character, I had the choice of 3. And for second character, I had two choices. And when I fix the first two characters, I only have one choice for the last thing. So in total, how many choices are there? 6. 6. Okay. Now, just a generalization. Okay, try to generalize this in your head. If there was A, B, C, D, then how many? I'm not going to give all the examples. Just see this and try to generalize. How many choices do I have for the first character? 4 into 2 into 3 into 1. You are, I mean, गलती से बोल दिया होगा, but 24. 4 into 3 into 2 into 1, no? 4 into Ah. 3 into 2 into 1. For the first character, I can have either A, B, C, D. If I fix the first character, let's say I choose anyone, then I'll be left with only 3 options for the next character. है ना? Yes. So 3. The next one can be 2, and the 2. next one can be 1. Do you guys remember we wrote some recursive code for this thing? What is this thing? Factorial, sir. Factorial. This is 4 factorial, no? Yes. I don't know if you guys remember factorial or anything. If anybody has a doubt right now in the lecture, just let me know. Okay. No. Okay, cool. So try to wrap your head around this thing. I'm going to tell you many things about permutation right now. See, the thing is, what I'm teaching you right now is more about permutation and combination rather than recursion. Okay. If you know recursion, it's okay. If you don't know, koi baat nahi. Okay. You can go back and revise. So, take it. Okay. Coming back to our question. How many options do I have for everything? I should be like clear enough for everything. So, like I said, wait a second, this is freezing a lot. Just a second. Step 1, step 2, and step 3. I could have gone for an easier question, but not today. So how is your actually front end going, guys? कैसा जा रहा है? तो CSS बकवास जा रहा है, बाकी सब अच्छा। क्या बकवास जा रहा है? CSS डिजाइनिंग ही क्यों? नहीं होती है। अच्छा, तुमसे नहीं हो पा रही है। मेरा बकवास जा रहा है। हाँ, अरे it is fun यार. It makes the web page look pretty. वो लॉजिकल मजा अलग आता था। अभी जावास्क्रिप्ट में मजा आ रहा है। जब हाँ, JavaScript is more difficult, तो उसमें मजा आ रहा है, लेकिन मजा आता है। CSS मतलब वो दिमाग डिजाइनिंग अपना नहीं लग पाता। ठीक है, कोई बात नहीं. Few people will become back-end integer. आदिल सर कौन से बैच से हैं आप? आदिल सर हैं कहाँ से? टाटा ही से हैं शायद. हाँ, ओके, cool. ओके. So ठीक है. So एक्चुअली हमारा फ्रंट एंड खत्म हो गया इसीलिए.
हाँ भाभा बैच का ना, भाभा बैच तो काफी, आई थिंक मुस्ताफिजुर वाज टेकिंग बैच वे बैक एज फार एज आई हाँ रिमेंबर। यस यस यस। cool 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 उसके So- बाद फ्रंट एंड खत्म हो गया, अभी बैक एंड चल रहा है। cool okay, we should not look at the answer right now, okay? I'm going to make this approach that I'm talking about, I'll make this so clear in your head that you'll actually understand, okay? Rather than me explaining each and everything to you, you will understand this. So so the rules were b can be at most 1, so that means b can be either no b's, 0 b's, or 1 b. C can be at most 2, that means either 0c, 1c, or 2c. I have 3 options. Okay. Okay, I just saw 19 people joined the lecture. Abhi to 5 the. Okay. I'll give a break in 7 minutes. Okay. Abhi I don't want to. Usually I take MCQ at 9:30, but we started pretty late and काफी time waste हुआ उसमें. Okay. So let's say n is equal to 3. ठीक है. I have 3 options A, B, and C. N is 3. What does n is equal to 3 means? If people who understood the question. Number of character possible. Okay. बहुत बढ़िया sound था उस microphone का. Okay. So there can be 3 characters. And what was my approach here? Only A's, only B's, only C's. Then I'll try the combinations. AB, AC, BC. Then if all 3 I can fit, then all 3. Okay. So let's go for the first step. Only A's. How many strings can be with only A's? Number of strings. 1. Cool. Now only A's. This is it. Okay. Now with only B's, 0. 3 character, 0. Okay. Only B's I cannot have because the rule says B can be at most 1. Okay. Now let's go for only C's. Same thing. C cannot be 3. Okay. C allowed C's are 0, 1, or 2. All 3. मैं था सर internet issue. Okay, कोई बात नहीं. Don't worry. So let me just decrease the size of this chat window. It's consuming a lot of space. Only A हो गया. Now I saw only B's. Then I'll see only C's. Number of strings with only C's will be 0. Okay. Now, other than A, I can have A and B. Okay. Let's go for put this over here. Now let's go for AB. How many strings of length 3 I can make where the characters allowed are only A and B? If I put one A over here, okay, and one B over here, what will be the third character? Only one. A. A. Is this clear? ये समझ में आया लोगों को? From where this A came? Yes. Okay. Anybody has an issue? ये कहाँ से आया? If I'm putting A and B, first of all, now I cannot increase B. One B is there, so I cannot put more B's. And my rule was only other character that can be there is A. Okay. So this is one string. And how many strings can I make by changing the characters? BA. So what I can do, like the simpler way will be, either I can put this B over here or here or here. So 3 choices are there. Yes. Okay. And there is actually more mathematical way to solve this, but I'm not going. Okay. That what Kanu was saying way back. You can actually permutate 3 factorial by divide by 2 factorial. Rather than that, we can talk by common sense. Okay. Either I can put the B over here, then 2 A's. So I'll get BA, or I can put the B in the center, or I can put B in the end. Okay. So there are 3 choices. 3 strings like this. Okay. Now
A and C. बताओ. Tell me, people. How many strings can I have with A and C? 3. 3. There is nothing different. बस B की जगह C कर दो हर जगह. Okay, just instead of B, just put a C. So A C A, C A A, and A A C. Cool. बट सर इधर जो कंडीशन दिया है C It is allowed to be 2. Yeah, sir. ठीक है. अभी हाँ. let's say there is only 1 C. ओके ठीक है? पहले 1C पे डिस्कस हाँ, करते पहले 1C पे डिस्कस करते हैं, फिर 2Cs पे जाएंगे, फिर 3Cs का तो ऑप्शन ही नहीं. हाँ. Okay. हाँ. So 1C I have taken. Now for 2Cs, how many options will be there? मोर 3. Another 3. ठीक है. So what is happening over here? I'm trying to put it in simpler terms rather than mathematical. You can actually choose. First of all, I'm writing this only for people who understand maths. ये वाला, ठीक है? Who do not, कोई बात नहीं. Okay? Who do not understand, do not get scared of this thing. Actually, if I choose 2 characters from ABC, 2 C's, and after that I permutate them, then I'll have to divide how many were common. So this should be the answer. Okay. This I'm not going to explain. But now it will take many weeks to just talk about permutation and combination. But still, so 1C's के लिए A and C के लिए I have this option. Now, सर सॉरी हाँ, टू बताओ. इंटरप्ट. ये कब- NC2 को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें तो सिर्फ NC2 चाहिए मुझे. देखो अभी हाँ मैं समझा सकता हूँ, बट द थिंग इज कि नहीं मुझे बाकी बच्चे डीपली बोर नहीं हो जाएंगे. जाना है उसको. ठीक है, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ ठीक कि है. क्या था वो. उतना बस ठीक है. रिकॉल कर. जस्ट 30 सेकंड में शॉर्ट रिकैप. हाँ हाँ बस बस ठीक बस है. बस. हाँ, अगर 3 कैरेक्टर है तो 2 चूज करना है इसमें से, तो 3 में से 2 को चूज करना है. ठीक है. ओके ये क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 minus 2 1 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. ओके. ठीक है. ये होता है एनसीटी. नहीं NC2 को क्या बोलते हैं वो मैं भूल गया हूँ इसलिए पूछ रहा था बस. कॉम्बिनेशन है वो- एनसी. हाँ बताओ. वो उसको एक्चुअली एक नेम था जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो. कॉम्बिनेटोरिक्स है यार, कुछ भी कह सकते हो. मैंने ध्यान नहीं दिया सी को क्या कहते हैं. एक सी एक ये होता था एनसीआर, एक होता था एनपीआर. हाँ ओके, दिस वाज परम्यूटेशन, दिस वाज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन. ओके हाँ, कॉम्बिनेशन है ये सारे कॉम्बिनेशन. एंड इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई विद आर फैक्टोरियल, दिस बिकम्स एनपीआर. ओके. NPR. सो ये सब अब सारे Okay. बच्चे तुम्हें नहीं, और मुझे ठीक है. दोनों को बुरा बोल रहे होंगे. हाँ. ओके. Okay, coming back. I'm not going to talk like वो वाला. Okay, NC2, NP2. We'll talk about by common sense what we can do. Actually, I'm generating an algorithm that I think will be very fast. Can anybody give me any idea how can I approach this? इसमें क्या loop use होगा? What should I do? Should I use loop or recursion or dynamic programming or something like that? What do you think will be the time complexity? अगर लूपिंग में जाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगा. ठीक है. तो इसको If- मेरे हिसाब से हाँ. रिकर्शन से सॉल्व करना पड़ेगा. If I actually go for by the factorial terms, ठीक है. So people who don't know time complexity, you guys have forgotten. ठीक है. So I'll just tell you. I'm not going back into time complexity. I'm just saying n factorial क्या होता है? It is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 जब तक 1 ना आ जाए. डॉट डॉट डॉट. यही होता है. यस. So इस पे अगर मैं एक big O मारूं, if I put a big O on that, and the time complexity will become order of n to the power n. N. And this is a very bad time complexity. Yes, sir. Okay. And like what we have seen in mathematical question and like dynamic programming and everything, what we try to do is, if something is 2 to the power n, we try to make it n to the power 2, something like this. Okay, either n power 2 or n to the power 1 or something. We take the exponential time complexity and try to make it polynomial. Yes. Okay. The algorithm that I'm actually trying to achieve is a constant time algorithm. Go off one. ठीक है. So this will be so fast. बस तुम्हें सारे corner cases देखने. See what happens in companies like Microsoft and Google and these people, all the Mang companies. Mang क्योंकि Facebook ने नाम change कर लिया. So
what happens in Mang companies, they are more focused on saving time. They usually don't care what approach you use. You can go for looping and recursion and stuff, but if you can actually use your common sense, that is what they are looking for in an engineer. Okay. So when I taught you guys DSA, I taught you on that level only. Okay. I do not want to bring down that level just because बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि easy question solve करेंगे. Okay. So I saw AB, I saw AC, and if I have other than A, okay, if I have B and C, if I have A and other than A, I have this BC combination. This is allowed, okay, because the number of characters are 3, so I can do that. Okay. So if I have 3 characters, देखो what I'm doing right now is trying to bring you ekdam in this approach. एक second. There are 3 places where I can put any of these 3 characters. Okay. B and C, I can put anywhere in this string. है ना? Yes. So I want to choose 2 places out of n. Something like this. Okay. I want to choose 2 places from n. N is 3 right now, where I can put B and C. Okay. And then I can change the positions of B and C. What do I mean? Let's say I choose first 2 places for B and C. Okay. Then what will be over here? A. A. Now if I change the places of these guys, C and B, I'll get a new string. है ना? Yes. So what I can do for this is, out of these n places, what I can do is, I can choose any one place where I need to put A. Okay. For this, out of this anywhere I can put A. Let's say I put A over here. Okay. And over here, for B and C, for B and C, for B, let's say, if I want to put B now, I have n-1 places where I can put B. Yes. है ना? Yes. Let's say I put B over here. And for the third place, I will have no choice. Okay. C will be left. I'll put C over there. So to put A, I'll have n choices. To put B, I'll have n-1 choices. And for the third character, I have no choice. I'll have to put it over there. Now this thing that I just wrote, this thing is more focused on when n is 4 or 5 or 100. Okay, n can be anything. Let's say n was 4. Okay, so you can put A anywhere. You can put A here, or you can put here, or you can put here, or you can put here. Okay, there are 4 places for choosing A. Okay, and you can have n-1 where you will put the A. Now n-1 places are left from where? सर n-2 होगा. 2 क्यों? सर मेरे पास में 3 प्लेसेस है ना अब. तो n-2 होगा ना वो. पहले n प्लेसेस थी, एक ऑक्यूपाई कर लिया तो कितनी बची? हाँ, n-2. पहले n थी, एक ऑक्यूपाई कर लिया तो n-1 हुई ना. ओके. एक ही ना ऑक्यूपाई किया, अभी तो n- पहले 4 जगह थी, अब 3 है, तो n-1 हुआ ना. ओके. ओके ओके. cool, बढ़िया बढ़िया, awesome. ठीक है, यही है कि एटलीस्ट यू शुड गेट कंफ्यूज सो दैट यू विल आस्क समथिंग. ओके, नहीं, मैं एक्चुअली ऊपर का जो फॉर्मूला था उस हिसाब से मैंने n फिक्स कर लिया, तो मेरे पास में अब बचेगा n-2 और फिर मेरे पास में बचेगा n-1 और फिर मेरे पास में बचेगा एक चॉइस, वो 1 रहेगा. वो फॉर्मूला बना रहा हूं. हाँ, इसीलिए मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा था. ठीक है, फॉर्मूलाज यहीं से ना आते हैं ब्रो, इवेंचुअली तो यहीं से आता है सब. ओके,
So what I was saying, so to put A, I have n places. To put B, I have any one place n minus 1. Can I put more than one B? No. No. Okay. So I put one B and one C, let's say. Okay. Wherever B is there, I can put a C after that. And then there are no choices. I'll have to put everything else with A. Okay. So एक final rule है. Now I'm going to actually write the algorithm. Okay. So for all A's, I have how many options? There will be only one option. Okay. One option. One option. If I put everything with A, there is only one string. ठीक है ना? सारे A भर दिए मैंने. Even if I jumble and everything, एक ही है. ठीक है? And अगर A B है, if I have A B, I can put just one B, no? Yes. Only one B is allowed. So I can put one B here or here. I have n places where I can put B. Okay? या तो मैं पहले B लिख दूं और बाकी A, या फिर A और फिर यहाँ B कर दूं और बाकी A, या फिर यहाँ पे A रहने दूं, यहाँ B कर दूं और सारे A, है ना? Right, right. Okay, so wherever I put B, that will be a new string. Now, AC के लिए again same thing है, just B की जगह C कर दो, तो n options. Okay. Now, if I have A and then I have BC, I can only put one B, okay, and C I can put two at most. Okay, but right now I'm seeing only one BC. Okay, I'm not going for BCC. उसके लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, दो C के लिए नहीं जा रहा हूँ अभी. ठीक है? So if I have only A, B, and C, what I can do? I have infinite amount of A's. I have one B and one C. For this, I have n into n minus 1 options. ठीक है? I'm pretty sure you guys will have confusion on this. I'll explain this again after 5 minutes. ठीक है? I'll give a break in between क्योंकि अब बहुत लोग का सर दुख रहा होगा. Okay? Because बहुत दिनों बाद I think you guys are going for this thing. So BC, other than A, I have these many options. Okay. Now, if there is A and then I have two C's and 0 B. Okay. Then what I can do? Then I'll have n into n minus 1 choices divided by 2. कहाँ से आया? I'll tell you. Okay. Just अब जिसको आते हैं permutation, they can divide by 2 factorial. But जिसको नहीं आता, I'll tell you. Okay. And the final and only thing left is I can have a, I can have one B, and I can have two C's. है ना? Yes. I can have no more than one B. I can have no more than two C's. Okay. For this, I'll have n choices, फिर n minus 1 choices, and then n minus 2 choices, and then Into 1. whole का half, because ये 2 है ना? ठीक है? Okay. हाँ. So I'm pretty sure these three things are difficult. Now this is the rule for any n. Either n is 1 or n is 2 or n is 3. This will be the rule. So do I need any loop or any recursion or any dynamic programming algorithm for this? कोई loop लिखने की जरूरत है? I only have कितना? 6 rules. I only have 6 rules, so I actually don't need to do anything else. Okay, I'll give you like the proof over here. If n is 1, okay, this will be our corner case. If n is 1, for any n, I have this thing, and if n is 1, then how many strings I can make? 3. है ना? Either A or B or C. One length key string I can have 3. Okay. And for any n, I'm writing this 6 set of rules. Okay. Let's see. For n is equal to 2, this thing is true or not. If n is 2, this is 1, this is 2, this is 2, this is 2 into n minus 1. 2 into 2 minus 1. Okay. So 2 into 2 minus 1 is 1. 1. Okay. This thing 2 into 2 minus 1 by 2, that is 1. Okay. And this
2 into 2 minus 1 into 2 minus 2 divided by 2. How many strings will be of this? 1 0 से Zero. मल्टीप्लाई करो. 0 Okay. 0 ठीक है, बिकॉज n is 2 ना, तो ये नहीं आ सकता. हम्म. BCC नहीं हो सकता. That's not possible. Now if I sum everything, 0 plus 1 is 1, 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8. For n is equal to 2, I'll get the answer 8. This is what we got earlier, no? Yes. Okay. Let's try for a n is equal to 3 also. Okay. I'm not going to write the strings now. Okay. For n is equal to 3, what will be respective values? For n is equal to 3. This is 1. Yes. This is 3. 3 This is also 3. This is 3 3 into 2. 3 into 2 6 Okay. This is 3 into 2 divided by 2. So 6 by 2, 3. 3 This is 3 into 2 into 3 minus 2 is 1 divided by 2. 1 by 2 That is, 6 by 2 if I add everything, 3 plus 3 6, 6 plus 6 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, plus 18 1 19 19. For n is equal to 3, I should get 19 90. Adil, can you write the code of this thing now? बताओ people. क्या सर, कुछ बोले क्या? हाँ, अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. हाँ Now can you write the code of this thing? सर पहले मेरे को वापस से पूरा रीड करना पड़ेगा. तुम मैं ध्यान था- नहीं दे रहे हो, तुम कुछ और कर रहे हो. I'm pretty sure you are doing CSS right now. नहीं सर, खाली देख रहा था क्या मिला है असाइनमेंट. तुम लोग CSS करो अभी. Okay. So what I'm saying is, let's take a little break. Okay. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. ये तीन आई एम प्रीटी श्योर यू विल हैव टू लाइक अंडरस्टैंड. ये समझ में आ गया ना? अगर सारे एज होंगे तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन. हर जगह पे ए रख दो. देयर विल बी ओनली वन स्ट्रिंग दैट विल हैव ऑल द एज. इफ देयर इज ओनली वन बी, देन यू विल हैव n ऑप्शंस. देयर इज ओनली वन सी, देयर इज n ऑप्शंस. आई थिंक यहां तक क्लियर होगा. Yes. दीज थिंग्स आर अ लिटिल मैजिकल. ओके, इसके बारे में Sir, बात करते हैं. सर थोड़ा नीचे का क्लियर है, ऊपर का नहीं समझ पा रहा हूँ अभी भी. ये क्लियर है? हाँ सर. ये नहीं समझ में आ रहा है. ऑल ए है तो ठीक है, 1 एक ही रहेगा करके. हाँ. लेकिन 2 है तो सारे ए हैं तो हाँ, ये तो एक वो स्ट्रिंग हो गई. एक स्ट्रिंग हो गया, उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकते हम. और बी कितने रख हाँ. सकते हो तुम? मैक्सिमम एक ही रख सकते हो ना. हाँ, एक ही रख सकता हूँ. पहली अच्छा, जगह पे बट बी रख दो. प्लेस कितना भी कहीं भी हाँ. रख सकता हूँ. Yes. इसलिए एन हुआ. ओके ओके, एग्जैक्टली. ठीक है, गॉट इट. पहले बी रख दोगे तो एक स्ट्रिंग बन गई. अगली वाली क्या बनेगी? ए के बाद बी होगा, फिर सारे ए होंगे. हाँ, तो इसके बाद क्या होगा? ए होगा, फिर बी होगा, मल्टीपल फिर सारे- कॉम्बिनेशंस बना हाँ. सकते हैं. एक स्ट्रिंग ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई. तो बी रखने के चॉइसेस कितने अपने पास? एन चॉइसेस है ना. बी हम एन चॉइसेस है. कितने ओके हैं ओके उसमें choices हैं? बराबर. कहीं एक जगह बी रख दो एंड एन ऑप्शंस यू विल गेट. ओके. ठीक है, क्लियर. सिमिलरली बी की जगह बस सी सोच लो. एक सी के लिए हाँ, क्या होगा? वही सेम होगा. Same होगा. ठीक है, cool. Okay. Now for ये मैं ऐसे कर क्यों रहा हूँ? Why am I actually doing this? Because I'm following that B's can be 0 or 1 and C's can be 0, 1 or 0 1 2. okay. So इसका खुद का combination we can actually take it out. कि how many choices will be there for this? For 0 B's and this many C's. 0 B 0 A. 0 B 0 C. ठीक है. B's कितने हैं? C's कितने हैं? ठीक है. 0 के लिए 0 1 2. ठीक है. B can be 1 तो 0 1 and 2. तो ये स्ट्रिंग कैसी लगेगी? If there is no B and no C, यानी कि all A's are there. Yes. If there is no B but there is one C, So AC. तो AC ये वाला. Now there are no B's but 2 C's, तो यानी ACC. ACC ये वाला. Now there is one One. B but no C, AB. AB. Okay. AB का रखना है. सिर्फ एक B रख सकते हो, बाकी सारे A रहेंगे. हाँ. This one. एक B अलाउड है, एक C अलाउड है. तो C
ABC. एक बी अलाउड है, एक सी अलाउड है, ये वाला। हम्म, एक बी अलाउड है, 2 सी अलाउड है, तो ए बी सी सी। CC लास्ट वाला। बढ़िया। यस सारे केसेस हम लोगों ने क्लियर कर लिए, और कोई ऑप्शन Yes. नहीं हो सकता। देयर आर नो मोर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। ओके, देयर आर 2 choices for B and 3 for C. So total we have 6 choices over here, and for each of these 6 choices I have written a rule. Okay, these rules I'll discuss. I'm pretty sure Rajneesh and people would have not texted yet. I will explain this again. Okay, but I hope this is clear, the top 3 ones. Okay, now we can take a break for 5 minutes, and attendance में लेता तो हूँ Saturday वाले lecture तो let's take some attendance. Okay, so which 2 batches are here? टाटा सर, Tata and I think Bhaba is there. भाभा So I'll take 2 MCQs. Okay, I'm just seeing. Okay. Okay, I'm giving 3 minutes for this question. थोड़ा सा सोचने वाला question है, but I'm sure you guys will understand. So what is this? Let me just copy this question so that I can post it in Tata batch also. So for Bhaba batch, I just posted 1 MCQ. Guys, attempt it for Bhaba batch. For Tata batch also, I'm posting 1 MCQ. Okay, for Tata batch also, there is 1 MCQ. Just attempt it. If there is any confusion, you can talk to me. तो सर कैरेक्टर कितने हैं अपने पास नॉर्मली? एक ही कैरेक्टर अलाउड है, मतलब ABC ऐसा कुछ है कि खाली एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर पे? कोई एक कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर। ए बी सी कोई ऑप्शन नहीं। अगर सिर्फ बीज हैं तो कितनी स्ट्रिंग बना सकते हो वैसे एन लेंथ की? सिर्फ सी है तो कितनी बना सकते हो? पहला ऑप्शन होगा जो मैं इतने देर से पढ़ा रहा था, उसका पहला मतलब जो मैं पढ़ा रहा था यहाँ टेबल, हाँ टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एक ही बनेगा। अरे आंसर डिस्कस कर रहे हो? सर आंसर भी आप ही बता दिए। नहीं, मैं तो बस नहीं बता रहा बोले था किस सर तरह। आपने कि पहला होगा, तो पहला तो वही है ना। ओ माय गॉड, तुम लोग ऑप्शन दे। यू गाइस आर क्रिमिनल, मुझसे भी क्राइम करवा रहे हो। ये भाभा बैच में अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहा लड़के? लेट मी रिफ्रेश। सर भाभा बैच के स्टूडेंट ज्यादा हाँ, नहीं है। स्टिल 2 people attempted, क्या बात है, इतना हाई अटेंडेंस है। सर ये तो सैटरडे का सबसे हाईएस्ट है, नहीं तो पिछले 2 हफ्तों से ना सिर्फ 3 लोग बैठते थे हम लोग सैटरडे में। ऐसा क्यों? 3-4 बस, के अलावा आते ही नहीं कोई। That is the thing, na, like posting homeworks and Saturday interview sessions. I have said this way back, I remember. People who actually come to these sessions and people who stay after 11, those are the people who are actually more focused on their career. बट सर पढ़ाने वाले भी तो ऐसे होना चाहिए ना। अरे अच्छे ही हैं सारे टीचर। अभी शुभांकर का प्रोफाइल पे नेम था थोड़ी देर पहले, वी वांट गोपी सर। अच्छा अभी तो प्रोफाइल नेम था, चेंज कर दिया उसका नाम। मैंने कहा आई एम नॉट वेरी स्मार्ट। कितना टाइम बचा? यूजुअली क्या करता हूँ पता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन में आई ट्राई टू टेक दैट क्वेश्चन। वो गैस स्टेशन प्रॉब्लम मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ,
मैं उस तरह का क्वेश्चन लेता हूँ एरे वाला, like I take something from trees or something, और लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम्स. But the thing is कि लिंक लिस्ट लेते तो अच्छा होता. the thing is बहुत कि कंफ्यूजन है. देखो ये कंफ्यूजिंग है, ये लिंक लिस्ट कंफ्यूजिंग. में मैं अच्छा कंफ्यूज हो लिंक जाता हूँ. लिस्ट. Okay. The thing is कि right now I have not written a single piece of code, but still algorithm तक पहुंचने में काफी डाउट है. Okay. Linked list में क्या होता है ना, you can easily come up with a concept, but when you sit down and start to code linked list, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि कौन सी नोड किसको पॉइंट करे, ये कैसे लिखेंगे, and that type of stuff. हाँ वो दिक्कत जाती है. वहां नहीं पे सर, आप जो सिखाए थे ना, रूट बनाना है, रूट डॉट नेक्स्ट, वो सब तो इजी लगता है. ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछ चुका हूँ. एक ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है. ओके, सो आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन. जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर. लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, डिस्कस भी किया है मैंने. कि इफ देयर आर सम नोड्स, ओके, let's say there are some nodes. How many nodes I do not know. Okay, because when you get a linked list, you only get the pointer to the head node. Okay, this Yes. is none. If I want a third node from the end, so what will I have to do? I want the value in this. Let's say this node is at the number value over here is 6. Okay, so what do you think? How to get this value? Once more. Question was there is a linked list. Yes, sir. I want the third node from the end. This question was asked to me at ISC Bangalore interview. Okay, इसलिए मेरे दिमाग में बैठा हुआ है ये. If this question is there, linked list का question है. Okay, I want third node from the end. The third node from the end has 6 value. I want to print the value inside that node. So logic बताओ क्या करेंगे. Right now at starting will be over here at the head node. What should I do to print this value? सर दो वो चलाएंगे. पूरा बोलो. वही दो सर for loop करंट चलाएंगे. दो फॉर लूप नहीं सर, अपना दो पॉइंटर लेके कर सकते हैं ना सर, प्रीवियस नोड और करंट नोड करके. Exactly, वही solution है. बट बताओ कैसे करोगे. कैसे करेंगे सर, बहुत दिन हो गया है तो सोचना पड़ेगा. मैं तो प्रैक्टिस भी छूट गई है. देखो वन वे इज कि पूरा एक चला लेते हैं. हाँ, पहला एक लूप चला लो. ओके, वन थिंग यू कैन डू, यू कैन सी हाउ मेनी नोड्स आर देयर. हाँ, एंड नोड तक के लिए एक फॉर लूप. एक फॉर लूप So I'll लिंक लिस्ट get फाउंड करने के कि लिए. 1 2 3 4 5 6, the value of n, the length of the linked list is 6. Okay, second for loop I'll start फ्रॉम द लास्ट. हाँ कि 6 अगर टोटल नोड्स हैं तो थर्ड नोड फ्रॉम द एंड विल बी n minus 3 plus 1. yes sir. ओके, यहाँ से थर्ड नोड जो है that will be यहाँ से n minus 3 plus 1th node. Okay, yes. this you can do. Okay, this is a very simple way to do that. You can do that. Now the question becomes difficult. This is what big companies do. They'll say solve this in a single for loop. Solve in this single for loop. Don't use two for loops. फर्क नहीं पड़ता है. Two for loops are order of 2n. Single for loop is order of n. Asymptotically both are same. Yes. ठीक है, but still they'll say reduce this also, remove this also. Try to do this in single for loop. तो क्या करेंगे? What Adil actually said, what we'll do, you don't need this n. Okay, what you'll do, you'll put first pointer, let's say p1 over here, and put the second pointer p2 at a distance of 3. ठीक है, this you can do. And then as soon as p2 reaches at a distance of 3, इन दोनों के बीच में 3 nodes का difference है. Now move both the pointers one by one. Next point पे p1 इधर आएगा, p2 इधर आ जाएगा, है ना? फिर p1 इधर आएगा, p2 इधर आ जाएगा. फिर next step पे
P1 will be here and P2 will be here. As soon as P2 dot next is equals is to none. none. As soon as P2 dot next is none, P1 is at the third node from the end. है ना? Yes, right. Print P1 हो जाएगा. हाँ, हो गया. हो गया. कोई जरूरत नहीं थी ये निकालने की. There was no need for n. Okay. Now this logic is pretty simple. लेकिन But वही सर, है कि अगर कोई हाँ, क्वेश्चन पूछे तो पहले 2 फॉर लूप वाला करके दिखा देने का, फिर अगर हाँ. बोले तो करने का ना. ये exactly. स्टार्टिंग में ही बता देने का हम टैलेंटेड है. हाँ. स्टार्टिंग में उनकी एक्सपेक्टेशंस गिरा दो, फिर उसके बाद देखो अरे एक्चुअली आई कैन यूज 2 पॉइंटर्स एंड इंप्रूव इट. फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ा दो. Cool. सही है. सो ठीक है. लेट मी सी कितने लोगों ने सही आंसर लगाया यहाँ पे. ओके, लेट्स सी. ओके, 37% क्लास ने तुक्का मारा है. इन टाटा बैच, भाभा बैच में 2 ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है और दोनों लोगों ने सही किया है. नाइस. ओके, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू राइट दिस कोड. कोड राइट करते हैं फिर समझाते हैं कि ये आया कहाँ से सब. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले व्हाट आई कैन डू इज कि इफ n is 1 then answer will be 3. ये तो है ना? Yes. Okay. So I can just put a condition over here. If n is 1, I can just return 3. Cool. Now Yes. I can try for other things. If n let's equals to 2. let's n is equal to 2 नहीं, अब बाकी सबके लिए नॉर्मल ही होगा. Okay. Okay. Let's say answer. Let's take a variable called answer, and I'll put a 1 over here. Why this 1 is here? For all a's. ठीक है. For all a's, I'll put a 1. ठीक है. This is for all a's. Okay. Now in this answer variable, I'll add the next condition. Okay, this is done. For this, in this is the value of answer variable right now. Okay, I'll add n into it. Answer plus equal to n. This is for 1b and rest a's. Clear? बताओ, ये समझ में आया? समझा. Same thing एक और बार. for 1c and all a's. Okay. Now next condition. तो a हो गया, ab हो गया and ac हो गया. इसमें ये ऐड कर दिया, इसमें ये ऐड कर दिया. अब इसमें I'll add this thing. What is this? Answer plus equal to, what was that? That was n into n minus 1. I'll take n into n minus 1. अरे क्या कर दिया? n minus 1. Okay. This is for 1 b and 1 c and rest all a's. Okay, cool. For 1b, 1c and all a's. So now this is added, n into n minus 1. Now I'll add this thing. Same thing, copy, and I'll divide by 2. whole divided by 2. Whole thing I'll divide by 2. Okay, and this is for 2 c's and all a's. Okay, for 2 c's all A. and rest all a's. Cool. And let's see the next one, the last one, last condition. For 1b, 2c and all a's. Now I'll just copy this, copy, paste. For 2 c's, 1b and 2 c's and rest all a's. इसके लिए what I'll do? I'll take this, I'll multiply this with n minus 2, and then I'll divide the whole thing by 2. Okay, whatever I get the value of answer in the end, I'll just return that value. Return Okay. answer. If I compile and run,
Let me see. Will I get any error? Okay. For n is equal to 1, third demo में चलिए, let's submit this. Okay. इसमें कुछ है ही नहीं. Okay. All the test cases passed. Time taken was 0.5. So what is the time complexity of this code? big of n. Order of 1, sir. O of 1. Order of 1. है ना सौरभ? लूप है ही नहीं. loop है ही नहीं ना सर. हाँ. So it is odd, big of 1. big of n. n नहीं, मतलब कुछ है वो नहीं ना एक recursion ही है ना. वेरिएबल पे सब हो जाता है ना. हाँ. अगर मैं आंसर चाहता जो if I वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें सब काम चल जाता है. see, ये तो मैंने मेरे दिमाग में तो लूप हाँ. लूप आ रहा था, ये देख के हाँ. ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं है. क्या कर दिए. Now that is the thing, that is the beauty of questions which are asked in interviews for Microsoft, Google and Facebook. Okay. Because everything is actually very simple if you boil it down. Because अपने को करना क्या है? Because इन लोगों ने कंडीशन ही इतनी रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि at most 1B and 2C. तो for that they actually made a question very easy. For B, I can have 0B or 1B. For C, I can have 0C, 1C or 2C. So I can write a table over here just for my calculation. Okay. कितनी गंदी लाइन बनाई मैंने. Okay, हाँ. For this, for 0B and 0C, that means all should be A's, है ना? For 0B and 1C, for 0B but 1C, that means 1A and 1C and all A's. Okay. 0B and 2C, 0B and 2C. So 2C's and rest all A's. Similarly, I can do for 1 and 0, 1 and 1, 1 and 2. This means 1B and all A's, 1B, 1C and all A's, 1B, 2C and all A's. All the choices have been covered. So 6 rule I just need to deduce 6 rules, and after that the code becomes pretty easy. ठीक है? Now I just want to know कि is this clear, these 3 rules, or you guys actually want me? I can explain. I want to explain. सर ये 3 जो है ना लास्ट वाला, ये जानना है मुझे. Yeah, exactly. थोड़ा सा देखना चाहिए इसमें क्या चल रहा है. Okay, what is happening over here? So let's see this one. Okay, let's just copy this line. Copy. I want to explain this thing now. Okay, for 1B, 1C and rest all A's. So I have n positions. Okay, I want to put 1B anywhere. I can put, where can I put out of these n? I can put 1B anywhere. Anywhere. Yeah. ठीक है, कोई एक point choose कर लो. ठीक है, so I have n choices to put 1B, है ना? Yes, right. And let's say one place got occupied by B. So for 1C, how many places I have left? n minus 1. n minus 1. n minus 1. अब जितने भी बचे हैं n minus 1 places. Out of these n minus 1 places, I can put anywhere C's. Okay. Now the thing is, let's say I put C over here. How many choices do I have for remaining things? I have no choice. I have no choice now. No choice, no choice. अब A's ही भरने हैं मेरे को, है ना? So n choices for B, n minus 1 for C, and for A's remaining I have no choice. So there is one condition only. I'll have to fill everything else with A. A. Now is this clear, Adil? n into n minus 1. एकदम. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर मेरा सर
बाकी का भी क्लियर हो गया, बाकी फिर जो भी हाँ फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ। देयर आर मोर पीपल इन द लेक्चर नो। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे फॉर इट्स दिस थिंग, ठीक है, फॉर 2 C's and rest all are A's. What I'll do, same thing, n options were there, okay, and I need to put one C anywhere, ठीक है। I'll have to put one C over here, okay, and another C anywhere else, okay. So what is happening over here in this example, B and C रखने के बाद what you can do, you can shuffle them also, no, you can put C here and B there. This will make a Yes, different right. string. But if you shuffle these two, string will not change, है ना? Yes, right. ठीक है? So whatever choices were there for this guy n into n minus 1, इसमें इसका exactly half n into n minus 1, आप चॉइसेस रह जाते हैं सर। इसके half choices will be if the characters are same. And this is what we have done, n into n minus 1 By 2. and divided by 2, है ना? Yes, right. So अगर if you want to go by NC2 NP2 also, out of n choices you need to choose 2 places, ठीक है? For 2 places I'll put C, okay, and then I can permutate them, okay. If I permutate them, nothing will happen because both of them are same. Yes. So actually you can remove this 2 factorial. यहाँ पे I chose 2 places. Once I put B, second I put C, and then if I permutate them, I'll get something, a new string. But here I can remove this, ठीक है? So whatever I'll get answer over here, इसका exactly half answer will be here. If I expand this thing, NC2 क्या होता है? n factorial by 2 factorial by n minus 2 factorial, ठीक है? And multiplied by 2 factorial. इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इसको सॉल्व करो, n factorial by n minus 2 factorial, n into n minus 1 into n minus 2 till 1, okay, till 1. n minus 2 factorial is what? n minus 2 into n minus 3 into till 1. 1. ये और ये कैंसिल हो गया, n minus 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n into n minus 1. Yes. But if I expand NC2, NC2 क्या होता है? n factorial by 2 factorial by 2 n minus 2 factorial by n minus 1. This is n into n minus 1. इसके बाद का n minus 2 factorial जो है वो कैंसिल हो जाएगा इससे, डिवाइडेड बाय 2 factorial. 2 factorial क्या होता है? 2 into 1, that is 2. सेम चीज है ना? Yes. Anybody has any issue with this? Let me see the chat. बताओ people. Actually, I was thinking about this question only before Shubham told me like we are going to take an interview prep session today. That's why I started this question. When I would have taken some easy problem, but I don't want to take an easy problem. Okay. So similarly was for 2 C's. अब इसी में if I have the last final and last condition that I want 1 B also and 2 C's also, then what will happen? For 1 B and 2 C, what will happen? First of all, choose 3 places for 1 B and 2 C. ठीक है? Choose 3 places, then permutate them. 3 factorial. But 2 of them are same, so divide them. Divide by 2 factorial. Now if I expand this thing, so this is n factorial by 3 factorial by n minus 3 factorial into 3 factorial divided by 2 factorial. अब इसको solve कर दें, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 1. So this is actually n minus 3 factorial, no? Yes. n minus 3 into n minus 2 into, हाँ, इसके नीचे क्या 3 factorial into n minus 3 factorial से कट गया। हाँ, वो synchronize हो रहा है, n minus 3 factorial multiplied by 3 factorial by 2 factorial.
ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो दिस इज n into n minus 1 into n n minus minus 2 divided by divided by 2 factorial and 2 factorial क्या होता है 2 into 1. 2. 2. This is what I've done, n into n minus 1 into n minus 2 by 2. बस. Any issue in this thing? बताओ people. Without this factorial stuff also I can like explain pretty easily. बिना ये सब NC3 तो मैंने इसलिए कर लिया because हाँ ये अच्छा लॉजिक हो गया, इससे समझ में आने लगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, तो इसमें बस चूज करने का है, कितने प्लेसेस है चूज करने के लिए, कितने बॉक्स में से कितने बॉल चूज करने हैं, वो सब वाले ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज देयर, व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज, चलो छोड़ो ठीक है। सर ये तो एक अप्रोच हो गया, इसमें और कोई अप्रोच यूज कर सकते हैं इसके अलावा? हाँ, गंदा वाला अप्रोच है अपना ऑर्डर ऑफ n टू द पावर n वाला। हाउ कैन यू डू दैट? अब वो है एकदम ब्रूट फोर्स। व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन व्हेन थिंग्स आर वेरी ब्रूट फोर्स? Generate all permutations. Choose ones which follow our constraint. ठीक है? Yes. Generating all the permutations, order of n to the power n हो जाएगा. And choosing the ones which follow our rules, that will be another order of n to the power n. एक for loop चलाना पड़ेगा, सारे permutation देखना पड़ेगा कि I need this, I need this, I need this, I need don't need this, don't need this. सर वो रिकर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन वही हो गया। सेम थिंग है, ठीक है। रिकर्जन करोगे द थिंग इज कि यू कैन नॉट यूज डीपी ओवर हियर। यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके। हाँ, यहाँ पे वो है ऑप्टिमाइज्ड सब स्ट्रक्चर इज देयर बट देयर आर नो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, सो यू कैन नॉट यूज डीपी यहाँ पे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग रिकर्जन एक्चुअली? सो दैट यू कैन अप्लाई सम डीपी ऑन इट, so that you can reduce the time complexity, है ना? Yes. But if there is no overlapping sub problems, then there is no point of DP, then there is no point of recursion. Cool, बढ़िया था ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारा क्वेश्चन डिस्कस करके। Okay, cool. So for the last time, anybody in the lecture has any issue with any rule from here or any line of code from here? Any line of code, I am ready to explain, guys. ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि some students understand and you don't understand. Okay, you can ask right now. I can explain even in an easier format, not just this factorial method. I can go even more further down and break it down. I can explain any one line of code if you want, so that you can understand everything else. Let me see the chat window. Guys, you can write in the chat also. Oh, I'll have to do that. Kya? Take name of everyone and ask. Hey, Lavanya is in the lecture. Lavanya, can you hear me? Yes, sir. Lecture देखा आज का कि सो रही थी? नहीं सर, देख रही थी। समझ में आया? पक्का? I will not cross question, वैसे बस पूछ रहा हूँ। समझ आया बट बहुत ज्यादा नहीं आया। ये समझ में आया क्या बताओ? ये सर ये समझ आ गया। एक्चुअली सर स्टार्टिंग में मैं नहीं थी, मतलब आओ। मैं सोच रहा हूँ तो स्टार्टिंग में नहीं थी तो काफी कुछ नहीं समझ में आएगा। सी आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चन, ओके, आई जस्ट वांट टू नो कि इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट। सो ठीक है, आई थिंक यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर एंड यू कैन सी इट। इफ एनी इश्यूज देयर यू कैन टेक्स्ट, ओके, वो तो हमेशा से ऑप्शन ओपन है, बट स्टिल अगर कुछ समझना हो लेक्चर में तो बता देना, ओके। Otherwise, what I'll do right now is, I thought that this question people will have a lot of doubt, but किसी ने doubt पूछा ही नहीं यार।
सर ज्यादा इजी कर दिया, ब्रूट फोर्स अप्रोच है नहीं ना। हाँ, ब्रूट फोर्स तो जनरेट करते कर अभी वो होता ना शिवम कलाम बैच वाला, वो परेशान करता गया नए अलग अलग क्वेश्चन, वो ब्रूट फोर्स करवाता मुझसे। चलो ठीक है, होगा। ओके, let's take a 2-minute pause in between. Okay, can anybody tell me what is the space complexity of this code? सोच के बताना। सर कांस्टेंट रहेगी ऑर्डर ऑफ हम्म? कांस्टेंट, हम लोग लिस्ट वाह। में यूज कर रहे हैं। Yep. The space complexity of this code is also order of 1. I have just number. What is n? N is just a number. Yeah. I'm just using that number to calculate the value for this variable. The easier way would have been to write the whole thing in a single line. वो ज़्यादा आसान होता। 1 plus n plus n plus n into n minus 1 plus n into n minus 1 by 2 plus n into n minus 1, यही पूरा। But उसके बाद I would not have been able to write this thing. Comment सारे के बाद कि क्यों लिख रहे हैं। Okay. So सर that's, हाँ बताओ। मेरे 2 डाउट्स हैं। पूछो। पहले तो मुझे ये जानना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करना। I need 4 hours for that. नहीं, शॉर्ट में बता दीजिए जैसे चलो, आपने वो एनसीआर हाँ। एक्सप्लेन किया था बस। Okay. देखो, time complexity comes into picture when you either have loops or you have recursion. ठीक है? And loops do not guarantee the time complexity will increase with loops also. क्योंकि somebody can write a loop like this for I in range n. Okay. Print hello world, something like that. Okay. So the time complexity of this code, what is the time complexity? Time complexity means कि what step in your code is repeating itself. Okay, and how many times? So this line is repeating how many times? n times. N times. N bar चलेगा. Whatever value of n I give, that many times this line will run. So Yes. this is order of n. Okay. If I write 1000 over here, then what is the time complexity? We go of 1000. And that is big of 1 because Big this is a of 1. constant. Hmm. Okay. Yes, अगर right. n की वैल्यू तुमने कोड में लिख दिया, if you write the value of n in the code, then it is a constant time algorithm. But if n is independent, if n is being taken from the user, then only, because when you are running the code, you don't know how much time it will take. The user can give the value of n as 1 also, it can give a value of 1 billion also. Okay. Yes, So right. over here, the concept of time complexity will come. Whenever loops are there, loops are repeating some line of code again and again, again and again, again and again. Then the time is increasing. Okay. Now, if there is a for loop that runs n times, and there is a for loop inside it that runs for n times, then how many times, whatever line I write over here, print hello world. Okay, let's say print something like hello world or something. Now, how many times this line will run? n time. Think. ये लूप के लिए n टाइम चलेगा. For this, it will run n times. Yes. And this whole thing will also repeat itself for n times. No? Yes. ठीक है? So Let's n say into n. for I in range n लिखा है मैं. Okay. So when the value of I is 0, the whole thing will run for 1 time. one time. This whole will run for 1 time. So this will run for n times. n time. This line. Now for value of I, when it will become 1, again this will run once, and this will run n times. n Okay. time. Okay. And for I is equal to 2, again this thing will run for 1, but this line will run for n times. n Okay. times. So I की value कहाँ तक जाएगी? n तक. n तक. So how many times my print statement is running?
n plus n plus n plus n होते होते n times outer loop चलेगा and n Yes. times हर एक Inner loop iteration में चलेगा। n times inner loop चलेगा. So this is n into n, है ना? Yes, right. So this is n square, है ना? Okay. Yes. Cool. Yes. Now trick questions, what happens in interviews and stuff, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, but like service based companies use these type of questions. Like for I in range, let's say n break, what is the time complexity of this code? 0 sir, constant. Big of 1. Big of 1. My code, this line ran, interpreter came over here, it entered the loop, it saw a break statement, loop is over, it came over here. No repetition happened. As soon as break statement was seen, this loop got over. Okay, so just because a for loop is present, that doesn't guarantee that time complexity is going to increase. People can have trick questions that if you see a break statement, loop is ending. Okay, so this is a constant algorithm. अगर Now with अगर हाँ, बताओ वहीं पे अगर कोई स्टेटमेंट होता तो वो तब big n of होता. n तब तो वो एक बार तो करता ही ना. हाँ, एक बार क्या कई बार करता. ठीक है, अगर कई बार प्रिंट करता. स्टेटमेंट होता. नहीं, Now repetition प्रिंट के बाद ब्रेक होता तो. हाँ, प्रिंट के बाद ब्रेक होता. स्टिल दिस इज रनिंग ओनली वन टाइम्स. हाँ, तो एक ही बार रन हुआ ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ. तो वहां तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना. एक लाइन बढ़ी ना, क्या हाँ. होगा? ऑर्डर ऑफ 1 + 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 हो गया. ओके, कांस्टेंट हुआ फिर भी तो वही हुआ. फिर भी इसको ऑर्डर ऑफ 1 ही बोलते हैं. ठीक है, व्हेनेवर यू नो द वैल्यू इनसाइड, इट इज ऑर्डर ऑफ 1. सो इट डजंट मैटर अगर इसके अंदर 1000 लाइंस भी रहे, so that will become order of 1000 plus some constant. One line for this, one for this, one for this, so 1000 plus 3. Still it is order of 1 only. Order of because 1. it's a constant algorithm. Okay. Okay. Now space complexity पे हैं. ठीक है. Similar thing happens for recursion also. How many times you are calling a function? Okay, same concept for recursion. Yes, yes. If you come for space complexity, things that you should not take into consideration while calculating space complexity. Input. Okay. Input की space count नहीं करते. If you are generating a list from the input, let's say I gave the value of input as n. Okay. And I'm creating now a list inside this code that is of size n. Now this is order of n space that I occupied. Okay. Okay. यहाँ पे for loop का concept नहीं आता. हाँ, यहाँ पे for loop space complexity का only the notation matches with the time complexity, but the concepts are totally different. Okay. Like if I have for I in range n, okay, and I'm saying print hello world. Now only see this piece of code. What is the space complexity of this? Am I take हाँ बताओ. Order of n. 1 1. n कैसे बताओ? सर n टाइम प्रिंट करेगा ना, तो n स्पेस यूटिलाइज करेगा. What space? कौन सी space? Space नहीं bro. When it is printing on the terminal, okay, that is not considered. Code के अंदर no extra space you are occupying. कोई variable, कोई list नहीं create किया, कोई variable. हाँ. So इस code का time complexity तो n हो गया. हाँ. But space complexity is 1. 1. Okay. Now same thing. Things which do not get counted. ठीक है. Output is screen. Okay. This doesn't matter in space complexity. Input का size. Okay. Matter नहीं करता. ये भी नहीं matter करता. If you are taking the value of input का size and then creating some space, some variables or some list depending on this, then space will increase. But input in itself उसका space count नहीं करते हैं. ठीक है. Okay, okay. If you have some variables, okay, you are generating some variables, let's say 3 or 3000, then also it is constant only because you know how many variables you are creating. Okay. Yes. Cool. So output screen, input size and variables. I don't think there is anything else.
So these three things are ignored in space complexity. The complicated part is when recursion comes into play. Okay. If I have a function n, okay, and if n is equal to 1, I'll return. Otherwise, I'll call the function again, but this time with the value of n minus 1. Now, what is the time complexity of this thing? कितनी बार function call होगा? Think. What is the time complexity of this code? कुछ भी बोल दो सौरभ, गलत बोलोगे कोई बात नहीं। नहीं सर, सोच रहा हूँ मैं। सर ये फंक्शन अंदर कॉल किया बाहर कॉल किया? अंदर 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 कॉल किया। इफ के बाहर है, बट हाँ। फंक्शन के अगर अंदर इफ का कंडीशन मीट नहीं हुआ तो फंक्शन को फिर से कॉल करेगा। हाँ। तो सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीगो ऑफ 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों? बताओ। क्योंकि एक ही बार तो कॉल करेगा ना, अगर कंडीशन मीट नहीं हुआ तो। ओके, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या होगा? ठीक है, एक बार इसको फंक्शन के n की वैल्यू 3 कर, मैंने कॉल कर दिया दिस फंक्शन समवेयर आउटसाइड, मैंने कॉल कर दिया 3 के साथ। तो एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया, n is 1, नहीं, दिस विल नॉट रन, ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, नाउ दिस फंक्शन वाज कॉल्ड फंक्शन ऑफ 2। विद वैल्यू 2। एक बार और कॉल किया फंक्शन को मैंने। अब फंक्शन ऑफ 2 के अंदर क्या होगा? फिर से हाउ डज फंक्शन ऑफ 2 लुक लाइक? फंक्शन विद द वैल्यू 2 is also this function only ना, सेम ही फंक्शन है। सेम ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। हाँ। ओके, सॉरी यहाँ सी नहीं लगा। हाँ, ये अपने आप को कॉल कर रहा है। So this guy will again compare n is equal to 1, नहीं, नहीं, again it will call फंक्शन ऑफ 1। function of 1. This function was called 3 times when n was 3. If I'll make n as 4, this function will be called, this func variable, this function will be called 4 times. 4 times. If I give n की value 5, it will be called 5 times. Okay, Hmm. so time complexity is actually order of n. n। जो भी n की वैल्यू दोगे उतनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, ओके, इवेंचुअली जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, then the function will be over. ओवर। Now the things which actually complicate, यहाँ पे तो हो गया, चलो space complexity. Tell me people, what will the space complexity of this code? Have I taken any variable or any list नो। or anything that depends on the input of n? नहीं ना? नहीं, So what should be the space complexity? वीगो ऑफ 1 मतलब हाँ, वीगो ऑफ 1 ही रहेगा। it should be, but space complexity is also order of n. ऐसा क्यों? Okay, what is function call? Saurabh, were you there? Have I ever taught you? नो सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा, okay. So this is your RAM, computer का RAM. Okay, inside your RAM, some memory is allocated for your code. Let's say this file is code.py, some Python file. Okay, this in your RAM will be bigger than this. Some memory was allocated for code.py. Okay, inside this allocated memory, every function call takes one space. Every function call takes space. This memory is called, Adil, do you remember what this memory is called on RAM? रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी। वो तो है, but this data structure, a stack. Okay, स्टैक। so this data structure that is used to allocate your memory on RAM, that is a stack. When I call the function func, I called it with the value of n as 4. Some memory was given, func 4. Inside func 4, I called func 3. है ना? यस।
This function was not yet over, but I called func3 उसके लिए एक memory allocate inside func3. When n will be 3 for this function call, inside it there will be a N2. func2. So always in your interviews, just remember to tell in recursion space complexity will be order of n on the stack. ये कभी मत भूलना, ठीक है? I mean, people know, but sometimes they ignore this number. But good companies do care about this. Okay. And inside func2, there will be func of 1 and as soon as n will become 1, this will return. This will be removed. And then Yes. previous function will be removed. Then previous will be removed. Then previous. So total order of n memory should be available in your RAM if you want to run this code. If it is not available, this will throw a segmentation fault error. ठीक है? Okay. The space complexity यहाँ पे stack पे function call is taking. So whenever recursion is involved, you should focus first of all in time complexity. Second, when it is stopping. Okay? जब भी ये रुक रहा है, तब देखना है कि अच्छा okay, at least n function calls will be there and each function call will occupy some memory on the stack. And stack is present on the RAM. तो इतनी memory होनी चाहिए RAM में. If that memory is not there, then my code will not run. Okay? So the space complexity becomes order of. Order of it. चलो बढ़िया, बहुत पुराने रिवीजन हो गए आज तो. Cool. Okay. नहीं अभी तक मतलब अभी तक वो चीज का डाउट था कैसे कैलकुलेट होता है. अरे I think there will be people in your group who have my number, so you can actually ask them. You can text me if you have any doubt or something. Okay. हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दिन भर तो मैसेज आते रहता किसी ना किसी का. Okay. Cool. मैं हूँ सर, सौरभ भाई को दे दूंगा. कानू दे देना यार इसको. Okay. If I start a interview question right now, in 10 minutes I won't be able to complete it. What I can do for that? Let me think. Let me ask a question. जैसे वो linked list वाला question I asked, no? Let's see if you can like tackle that problem. The logic, okay, coding part we can see. So graphs पढ़ा तुम लोगों ने? Did you guys study about graphs? हाँ सर, आप ही पढ़ाए थे. Okay. Saurabh, was graph taught in your batch? Yes. So ठीक है. I'm not going into coding part of graph. Okay. Logic बस सोचना what you can think of this thing. Let's say, first of all, what is a complete graph? I'll tell you. Complete graphs are the graphs which have all possible edges. All edges. If I have n nodes, या फिर vertex, या फिर whatever you want to call it. Okay. If I have n nodes in a complete graph, how many edges can be there? Thank you. No idea, sir. इस तरह का कभी क्वेश्चन आया ना किसी भी इंटरव्यू में, you should actually take a copy and pen. You can ask for that, or if you have a whiteboard or something, you can do that. You can actually solve for small values of n and see for yourself. If n is 2 nodes are there, then how many edges are possible in between? 2. Directional नहीं है, ठीक है? Undirectional. अच्छा, undirectional 1. एक edge. Okay. N is 2, edge is 1. If n is 3, how many edges are possible in between them? 1, 2. 1, 2, 3. Edges are 3. Now think for a second. अभी एकदम रुक जाओ और how did you come up with 3? First of all, you drew this edge in your head. Yes. Then you would have drawn this edge. Yes. And you would have drawn this edge. Yes. Okay. So what your brain is doing is actually
first of all, it is taking any two vertex. Beforehand, no edges are there. Take one vertex and draw an edge with the another vertex. Okay? So, for the first edge from this vertex, how many options are there? थोड़ा सा फिर से combination आ रहा है. एक और है बस. For the first guy, you can either put one edge over here और एक उधर कर सकती है. या फिर यहाँ कर सकते हो. ठीक है, बस दो ऑप्शन है. If n is 3, for the first edge, you have two options. है ना? Yes, yes. अब ये 2 क्या है? 2 is a magic number. Let's see. Actually, for the first node, if you ignore, you cannot have edge on itself. ठीक है? So that means you have n minus 1 choices. ठीक है? इस Yes. वर्टेक्स को छोड़ के किसी और एक वर्टेक्स पे एज मार देना. ठीक है? ये एक एज बना दिया मैंने. Now for the next option, how many choices you have? Now you cannot put an edge on itself. This is No. not allowed. And this edge you have already taken. With one node you have already taken. Okay. So how many options you have? From Only n, one. you removed one this one and one this one. You cannot make edges on this one and this one. So you have n minus 2 options now. है ना? Yes, yes. Similarly, to n minus 2, let's say I draw over here. Now, for this guy, you have n minus 3 Only one. options. N minus 3, you cannot put edge over here. You cannot put edge from here to here. Okay. So, okay, n minus 3 sahi hai. Let me see. So, if I plus 1. If I solve this thing, n is 3, so 3 minus 1 is 2, 2. plus n minus 2, 3 minus 2 is 1, plus 0. 3 minus 3 is 0. तो टोटल कितनी एजेस आ सकती हैं? 2 plus 1 plus 0. 3. Let's make a bigger graph. Similarly, इसके लिए n minus 1 choices है. किसी एक vertex को choose किया और एक edge मार दिया. Let's say I'm putting one edge over here. Okay. So now one edge is over here, and for this vertex, you cannot put an edge on this vertex because this is already present, and you cannot put a vertex on itself. So for this guy, you have n minus 2 options. N minus 2. For first one was n minus 1, then you had n minus 2. Similarly, you'll have n minus 3. Okay, Minus till you reach 0. Okay? n minus n. So if you have value of n as 4, then 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1, and 4 minus 4 is 0. If I add all of this, there will be total 6 edges. 6 edges. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. complete graph. है ना? Yes. एक सिंपल अप्रोच बताऊं. Let's say 1000 nodes are there. I'm not going to draw 1000 nodes. कोई भी nodes हो, कितनी भी amount की. From n, choose any two and draw an edge. हो गया. NC2 क्या होता है? n into n minus 1 by 2. 2. ठीक है? And this will be the total number of edges. If I put the value of n as 4, this will be 4 into 3 by 2. 3 to the 6. Right. ये logic मतलब if you understand combination, choosing point. Yes. So out of n nodes, कोई भी दो vertex choose करो, बीच में edge मार दो. कोई भी choose करो, edge मार दो. ठीक है? That will be the total number of. So there are two approaches. If you know NC2, you can straight away go for that. If you don't know, you can go slowly and do this. अगर now if I actually solve this thing, जो मैंने ये किया था n minus 1, n minus 2, n minus 3. So what is that? N minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 till 1 and then 0. ठीक है? Eventually it will become 0. Okay? N minus n will be 0. And what is this? This is sum of first n minus 1 natural numbers. Yes.
तो sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by n 2. plus 1 So sum of first n minus 1 natural numbers will be, instead of n, put n minus 1. n minus 1 इस n की जगह I'll put n minus 1. n When I'll minus put n minus 1 here, n minus 1 plus plus 1. 1 by 2 Minus 1 plus 1 cancel हो गया. What is this? N into n minus 1 by 2. n minus 1 by 2 This is exactly the derivation of this formula. है ना? yes So this is the beauty of maths. It doesn't matter from where you actually start from. ठीक है? If you start from this approach, you'll eventually reach this. If you start from this, you will reach this. Okay? Both are the same approaches. But अगर formula आता है तो direct formula, तो नहीं आता है तो फिर derive कर लो. Okay? Cool. yes चलो बढ़िया. So this is also a very good question. Now what I'm going to do is going to मैं कुछ demo MCQ डालूंगा. Okay? ऐसे बस मार्क कर देना तुम लोग. I like taking attendance. Cool? okay Okay. Okay. सर आज का है ना विदाउट एमसीक्यू भी अटेंडेंस हो जाएगा. ऐसा होता है क्या? हाँ होता है सर ट्राई कर लेते हैं सर। सैटरडे का हो जाता है. मैंने कभी किया नहीं. चलो आई एम क्रिएटिंग Ex- अटेंडेंस. जो लेक्चर आप डालते हैं वहां पे आपको एक्स्ट्रा लेक्चर डालना पड़ता है बस हाँ कर दिया. चलो मैंने सक्सेसफुली क्रिएटेड अटेंडेंस. क्या बात है. कूल. I'm sending you guys the participation. Yeah, I'm going to send the link of the question that I just solved, so that you can just like solve on your own. I created attendance in what? सर सबमिट कर सकते हैं ना अटेंडेंस Bhaba batch. Okay, I'm Tata batch को ना created this. Cool. This I did not know. मेरे को डांटना पड़े कहीं से. Okay. इतने दिनों बाद आया मैं और आकर के सब कुछ गलत कर दिया. सर बहुत दिनों बाद हम मिले, हम भी बता दिए कुछ ट्रिक आपको. सही है सही है सही है. ओके गाइस. और सर हम लोग का नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर कौन होंगे? मेरे को नहीं पता ब्रो. ये इस सब इन्वॉल्वमेंट से बाहर ही रखते हैं मेरे को. मतलब क्यों सर ऐसा? हाँ अरे नहीं, अब ये मैनेजेरियल वर्क हो ना. अब जैसे नया बैच जो आ रहा है उसमें ये लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा लाइक फोकस ऑन जावास्क्रिप्ट एंड स्टफ. वी वोंट फोकस ऑन पाइथन एंड स्टफ. सो उस वो डिस्कशन इज अ डिफरेंट डिस्कशन. तो उसमें मैं अभी इन्वॉल्व हूँ. तो अभी तो फिलहाल पैकेज हम लोग को पैकेज सर भी जावा कम पढ़ा कर लेते दिया. हैं आके. तो सर उसमें डीएस पढ़ाने वाले, डीएस आप पढ़ाने वाले हो क्या? हाँ ऐसा बोला तो क्या. हाँ जेएस में जावास्क्रिप्ट. अच्छा सर एक डाउट था मेरा. दो डाउट पूछे यार. जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं भावा बैच में. हाँ. लेकिन मुझे कुछ लेक्चर अगर टाटा बैच का एक्सेस करना है तो उसका पॉसिबिलिटी नहीं है. आई डोंट ऐसा थिंक. क्यों? आई मीन अब तुम्हारे बैच में जो भी तुम्हें देखना है उसके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो होगी. हाँ उसके वो पूरे कंटेंट्स हैं हमारे पास में. लेकिन एक कभी होता है ना कि किसी सर का कोई लेक्चर बहुत अच्छा है, मतलब एक टॉपिक में बहुत स्ट्रांग है वो, तो वो टॉपिक अगर हमको उस बैच से एक्सेस करना है तो उसका एक पॉसिबिलिटी होना चाहिए ना सर. टीचर के पास लिंक होना चाहिए टीचर से. आई मीन अपना आईडी यार पता है क्या, मतलब लिटरली अभी जैसे मैं मनीष का अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो मतलब टीचर्स को भी एक्सेस नहीं होता है सारे बैचेस का. तो स्पेशली बिकॉज आई थिंक मनीष के में टाटा बैच या फिर भाभा कोई एक बैच नहीं एडेड था. सो दे हैड टू वर्क इन द बैकग्राउंड, दे हैड टू रिजॉल्व दैट सो दैट इवन टीचर कैन एक्सेस द अदर बैच. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये लिमिटेशन है. ठीक है, होगा किसी लेक्चरर का लेक्चर अच्छा होगा कंपैरेटिवली, बट आई थिंक एवरीथिंग इज एक्चुअली ऑन द सेम थिंग. ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता टीचर्स में. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स में इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं कि कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत खराब. नहीं मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ. मैं हाँ मतलब होता तो अच्छा रहता, बट आई डोंट थिंक देखिए इट्स नेसेसरी. मेरे पास में जो टेक्निक है a प्लस बी को एक्सप्लेन करने की वो कुछ अलग है. आपके पास में एक टेक्निक होगा a प्लस बी कुछ को आप नया अलग मिलेगा से आप नया एक्सप्लेन करोगे कुछ. उसमें जो आपने एग्जांपल पुट किया
वो नया हो सकता है मेरे से। तो that's true. वो तो यानी सामने वाला कैसे अंडरस्टैंड होता है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। वो मेरे लेक्चर से भी हो सकता है, आपके इससे भी हो सकता है। एंड बट एक और ये भी बात है ना भाई कि मतलब बहुत और इन्फिनिट तरीके हैं चीज़ों को सॉल्व करने के। ऐसे करे तो आदमी MIT के टीचर और अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं वहां से हाँ लेक्चर देख रहा हूँ। तो मतलब सारे इट इज ओवरवेल्म मत करो अपने आप को, ठीक है, ओके। ठीक है, डोंट ओवरवेल्म योरसेल्फ कि बहुत सारा अगर सोर्स मिल जाएगा। फिर कई लोग एक्चुअली ऑब्सेस करने लगते हैं DSA पे। जैसे अब चलो आदिल के पास अकल थी कि मतलब इतना ऑब्सेस नहीं किया, वरना चाहता तो वो भी बैच ट्रांसफर लेकर के फिर नेक्स्ट में आ जाता और फिर उसका टाइम वेस्ट होता काफी। ओके, सो डोंट ऑब्सेस ओवर अ सिंगल सब्जेक्ट। ओके, नहीं, अभी इफ जैसे इशू हाँ बताओ इशू ये हुआ हम्म कि डीएसए तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम्म जावास्क्रिप्ट में हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। हम्म तो उस टाइम पे हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो फिर हमको तो फिर वो गूगल का हेल्प लेना ही है, यूट्यूब का हेल्प लेना ही है। हम्म। अगर हमारे पास में ही कोई टीचर का कंटेंट अच्छा है तो हम उसको भी देख सकते हैं। You can approach the individual teacher, he can send you the recording of his lecture. ओके एग्जैक्ट हाँ, एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे सकते हो, तुमको एक्सेस नहीं दे सकते दूसरे बैच का। दैट हाँ इज थोड़ा अथॉरिटी वाला इशू। ओके ओके, ओके you can act like talk to the instructor straight away कि I want to have your lecture recording on this topic, so the lecturer can provide you that, but दूसरे बैच का access is a big deal. I don't think that it will be very difficult to manage। अगर इन लोगों ने ये कर दिया तो इनके लिए बहुत मैनेजमेंट में डिफिकल्टी होगी। Okay, so this is for easier management of the staff also as well as students. Cool. एंड करा जाए? आपकी इच्छा सर। ये बताओ कैसा था ये क्वेश्चन, काउंटिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वाला? उससे ज्यादा मुझे बेटर वो हमने जो ग्राफ पे बात की वो अच्छा लगा। ये मैं सुबह उसमें मेरे को ये भी मन था ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने का, ठीक है। शॉर्टेज उसमें अब मैं बाय डायरेक्शनल में सोच रहा हूँ। सर ये वाला हम लोग किए हैं क्या? शॉर्टेज यूनिक लीड कोड प्रीफिक्स नहीं, लीड कोड में किए नहीं, ये नहीं किए। ये वाला किया है? नहीं, आई डोंट नहीं थिंक नहीं सो। नहीं ये नहीं नहीं, नहीं किया मैंने सर। आज पहली बार देखा। हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, फटाक से एक्सप्लेन कर सर देता हूँ ये जैसे। आया बताओ। था हम लोग का टेस्ट में आया था। टेस्ट में आया था। ये इस साल माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछा गया था। हम लोग का टेस्ट में आया था सर। अच्छा है ना कि डिफिकल्ट चीज के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं ताकि बाकी सब आसान हो जाए। सर ये गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेंगे हम लोग को? एक फॉर गिग्स पे और कहाँ? कैसा सवाल हुआ ये? किस तरह का सवाल है ये? मतलब ये है यार, मतलब कुछ भी मतलब ये सॉल्व। जो लेट लेट कोड जैसा ये भी है ना एक पोर्टल? हाँ, एक फॉर गिग्स और लेट्स से गूगल इंटरव्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें कहीं होगा ऑप्शन ये, गूगल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। मेरा कोई पेड वर्जन थोड़ी है, बस खोल लो यहाँ पे सारे क्वेश्चन है जो खोलना है, देख के सॉल्व कर लो। नाइट ओपन दिस, बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन लग रहा है ये। अब ये देखो एक्सपीरियंस से आता है कि मतलब क्वेश्चन का नाम देख करके मन करके मतलब लग रहा है कि बैक ट्रैकिंग का, बैक पाइथन 3। तो ईरानी वाला So, आ गया फिर से। हाँ ऐसे वो सॉल्व करते रहो। टाइम नहीं यार इस सब का मेरे पास। अच्छा लगता है DSA मेरे को भी, बट आई हैव टू फोकस ऑन माय नहीं रिसर्च। तो इससे फ्रंट एंड और बैक एंड से मुझे डीएसए ही ज्यादा पसंद आ रहा है। वही है, बट ऑब्सेस मत करना। फ्रंट एंड बैक एंड इज एक्चुअली लाइक दैट विल हेल्प यू इन गेट लैंडिंग अ जॉब। फोकस मोर ओवर देयर। DSA तो तुम लाइफ टाइम कर सकते हो ब्रो, हाँ सर, ये तो मैं तो बस हॉबी है। जावास्क्रिप्ट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ डीएसए ये करना है तो बस जावास्क्रिप्ट हाँ, में। ये हॉबी है बस। नहीं DSA सर, लेकिन स्पोर्ट्स है। जितने भी इंस्ट्रक्टर आए हमको अभी तक वो लोग हमको ये बोलते हैं कि डीएसए का प्रैक्टिस करो, डीएसए का प्रैक्टिस करो। अच्छी बात है यार, मेरी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा है, मार्केट में मेरी वैल्यू बढ़ रही है सर नहीं DSA इंस्ट्रक्टर की। एक चीज है, कभी हम्म, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग डीएसए जावास्क्रिप्ट में करवा सकते हैं क्या? हाँ मैं मतलब जैसे हम पाइथन में सॉल्व कर रहे हैं ना, हम्म, तो कहीं पे कंफ्यूज होगा तो आपको पूछूंगा मैं। बिल्कुल यार, जेएस में सॉल्व करके। मैं भी अब JS में ही पढ़ाने वाला हूँ ना आगे, तो हाँ तभी तो सर हमको यही लगता है कि जावास्क्रिप्ट का अगर हमको स्किल डेवलप करना है तो उसमें डीएसए सॉल्व करूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एफई का पूरा क्लियर हो जाएगा।
बात तो सही है, जावास्क्रिप्ट पे कमांड आ जाएगा तुम्हारा। सही गाइस, ओके सो आई एंड द लेक्चर नाउ। कोई इशू हो तो कानून नंबर दे देना सौरभ को, ठीक है? Yes If sir, you guys yes have an sir. issue, you can contact me. Okay, Yes, yes, yes. cool guys, Definitely. I'm ending the lecture now. Bye guys, take care. Thank you, thank Thank you. you, sir. Okay bro, bye bye.